In the last class, we have seen different classical encryption techniques, means the definition of it and some technical terms that you have to know about this. Like if I ask you, what is cryptanalysis? What is cryptology? What is cryptography? You know the differences between them, right? Okay, so cryptanalysis, we have seen that means what? Study of principles or methods of deciphering ciphertext without knowing the key. And this cryptanalysis also known as code breaking. Then cryptology means field of this both cryptography, you know, that the study of different encryption principles. So cryptology is a combination of both cryptography and cryptanalysis. Now, some technical terms we have seen, like plain text, cipher, or cipher, key and cipher and decipher, cryptography, cryptanalysis, and cryptology. And then we have gone through the symmetric cipher method. Okay, and then these two mathematical equations regarding that. Now, cryptography. We will go through different techniques under this. Okay, so this cryptography can be characterized with the help of the techniques that we are going to use. Suppose substitution and transposition, product, these are the encryption operations that we can use. Then another way of characterizing this cryptographic system by the number of keys that you are going to use, like single key or two key. Okay, single key is also known as private key. Two key is also known as public key. Now, one more way of characterizing this cryptography is how you are going to process the plain text. That is either block or stream, right? So do remember that the way how means we are characterizing, or you can say that how we are classifying the different cryptography techniques. We have seen three of them. First, depending on the number of encryption operations we are use, or sorry, type of encryption operations, either you may use transposition, substitution, product, then number of keys you are using, single or double, or means two, then the way you are processing the plain text. Now, cryptanalysis. Can anybody of you tell me what is cryptanalysis? I have just explained it to you. What is cryptanalysis? Anyone from you? Himanshu, can you tell it? Himanshu. I think Himanshu is not in the class. I think I have to remove. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Oh, you are okay. Please answer the question. What is cryptanalysis? I explained it at the beginning of the class, in the last class also. Sir, last class মই present নাছিলো sir. আজিতো প্ৰথমতে কৈছিলো কি হয় cryptanalysis. Sir, sir মই চাগে মোৰ late হৈছিলে join হোৱা. Sir, মই join হওঁতে already আপুনি present কৰি আছিলে. Don't be late in the classroom. Why you are late, Himanshu? Sir, মই 9:30 পৰাই মই lobbyত আছিলো sir. Sir, আপুনি accept কৰা নাছিল চাগে. Okay. Anyway, and apart from Himanshu, any one of you, raise your hand and answer the question. Sir, analyzing the type of cryptography applied in a message, then decrypting. The way I have explained it at the beginning of the class.
Rajesh, can you tell it? What is cryptanalysis? Okay, Raskishore is going to tell it. Sir, Raskishore, you tell it. What is cryptanalysis? sir, it is the process of decoding the decoding the encrypted text actually without trying to without knowing what is happening. So not knowing what is happening. So without actually trying to find out the plain text or the source thing like that. Okay, good. So Rajesh, can you tell it? Are you there, Rajesh? I think Rajesh is not in the classroom. I have to remove him. Sir, Ha, Rajesh, bolo. hello. Okay, so that's why I told you, all of you, please be serious to the topics. There's few topics that I used to discuss in the classroom, because I'm not discussing a lot in a classroom. I know the limit, so that's why I have discuss only some topics. Those are very important for you, and those you can digest in a single classroom. So cryptanalysis, already I told it to you, all of you. Basic terminologies when I was discussing about the basic terminologies, I discussed this, even in today's class also. Cryptography, cryptanalysis. Cryptography means study of encryption principles or methods. Remember it. Cryptography means we are studying the encryption principles. Okay? Cryptanalysis is the study of principles for deciphering the ciphertext without knowing the key. Okay, माने वो सारे प्रिंसिपल्स को आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, जिसके जरिए आप ciphertext को ब्रेक कर रहे हो, but without knowing the key. Key के बारे में आपके पास कोई आइडिया नहीं. Without knowing the key, you are trying to break or decipher the ciphertext. That is known as cryptanalysis and famously known as code breaking. Okay. I'm repeating it again. Cryptanalysis means study of principles or methods of deciphering the ciphertext without knowing the key. And this is also known as code breaking. When we combine both of them, cryptography and cryptanalysis, what we get? All of you, what we get when we combine cryptography and cryptanalysis? Cryptology. Cryptology. Okay, cryptology. Don't forget these technical terms. You should remember it. Cryptology means we are including both cryptography and cryptanalysis. Cryptanalysis or code breaking. Now coming back to this cryptanalysis. Now objective to recover key not just messages, general approaches like cryptanalytic attack and brute force attack. Now coming to the first one, cryptanalytic attacks. My screen is visible to all of you. Dekhi paya asa tumaloke screen phone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. So ciphertext only no algorithm and ciphertext and is statistical. No or can identify the plain text. So if we attack the ciphertext, so we know the algorithm only. Okay, so this means this is a kind of static approach. Then non-plain text. Know or suspect the plain text and ciphertext. Chosen plain text. Select plain text and obtain ciphertext. Chosen ciphertext. Chosen ciphertext means select ciphertext and obtain plain text. Then chosen text. Rajesh Barbar waiting room. Excellent. Chosen text means select plain text or ciphertext to encrypt or decrypt. Mane ki koisu ami? Cryptanalytic attacks means what? First of all, if we consider a ciphertext, so we have to know the algorithm, right? And this is a kind of static approach. Now, suppose you have idea about the plain text. You suspect about the plain text that what is there, right? Then suppose chosen plain text. You are choosing the plain text. Now you try to obtain the ciphertext. Then chosen ciphertext is vice versa. Mane tumi ciphertext to select korisa. Now tarpora plain text to uliaba. You try to find out the plain text from the ciphertext.
So these are the different ways of attacking. Suppose you are choosing the text only. That means that either plain text or ciphertext. Now, some more definitions like unconditional security and computational security. Hello. Who is there? Hello. Sir Rajesh, am I audible, sir? हाँ ऑडिबल पर आपका दो ये अकाउंट दिखा रहा है, एक तो ज्वाइनिंग दिखा रहा है और एक सर मैं मतलब हाँ सर लैपटॉप से अभी कनेक्ट किया, मैंने अभी बात कर रहा हूँ सर, लेकिन मोबाइल से वो कनेक्टिंग शो कर रहा था तो मैंने लैपटॉप से फिर ओपन करके किया। सर आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे सर, व्हाट इज नहीं हो गया, क्रिप्टोग्राफी कोई बात नहीं। ये एनालिसिस। पूछा था कि क्रिप्टो एनालिसिस क्या है, ठीक है, और क्रिप्टोलॉजी क्या है, तो हो गया ये। आप लोग जो टेक्निकल टर्म्स हम डिफाइन कर रहे हैं, प्लीज रिमेम्बर दोस टर्म्स। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू डिफरेंट टॉपिक, दैट इज क्रिप्टो एनालिसिस। एंड क्रिप्टो एनालिसिस में हमने देखा कि किस किस टाइप से क्रिप्टो एनालिसिस अटैक हो सकता है। प्लेन टेक्स्ट आप सस्पेक्ट करके रखे हो तो आपका अटैक यहाँ पे हो रहा है साइफर टेक्स्ट। You try to convert the ciphertext from the plain text or vice versa. Now, some technical definitions we are trying to know, that is like unconditional security and computational security. Unconditional security, no matter how much computer power or time is available, the cipher cannot be broken since the ciphertext provides insufficient information to uniquely determine the corresponding plain text. ठीक है, अनकंडीशनल सिक्योरिटी का मतलब ये है, आप चाहे जितने भी रैम वाला अपना सिस्टम यूज कर लो, ठीक है, बट जब तक आप वो सिफर टेक्स्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं गैदर कर पा रहे हो, देन यू कैन नॉट ब्रेक इट। ऑब्वियसली it actually not depending on the power of your system, it actually depends on the how smart you are and how smart you are to break the algorithm. Then computational security means given limited computer resources, as for example, time needed for calculation is greater than the age of the inverse, then cipher cannot be broken. That is also a kind of means question mark, because nowadays we can see that cipher can be easily broken. But what we need, some confidential informations, like suppose the CVV of your card or different approaches are there, but still if we go through the technical definitions, this means computational security means you have been given some limited computing resources, and within that limited computing resources, you cannot break the ciphertext. Now, ये तो हो गया आपका टेक्निकल कुछ डेफिनेशन अनकंडीशनल सिक्योरिटी, जिसमें हमने जाना कि आपका कंप्यूटर का पावर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, आपका एल्गोरिथम और आप कितना स्मार्ट हो, ठीक है, इस साइफरटेक्स्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है आपका ये कितना पॉसिबली और कितना एक्यूरेटली यू आर गोइंग टू ब्रेक द साइफरटेक्स्ट। सिमिलरली कंप्यूटेशनल सिक्योरिटी का मतलब ये है, अगर लिमिटेड कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज सप्लाई किया गया है तो आप साइफरटेक्स्ट को ब्रेक नहीं कर सकते हो। आपको टाइम दे दिया गया है कि 1 ही घंटे के अंदर करो, तो इट इज नॉट मींस यू कैन नॉट से दैट इट इज नॉट पॉसिबल, बट it may not be possible. Okay, it depends actually. Now coming to the next one, brute force approach, very very important. Even I have discussed this term in our artificial intelligence class also. I hope you can probably remember those things that I have discussed in the artificial intelligence class about brute force search. মই অলপ সহজ অৰ্থত যদি কওঁ, brute force search মানে তোমাৰ ওচৰত যিমানখিনি approaches আছে, যিমানখিনি candidate solutions আছে, গোটেইখিনি apply কৰা। Means whatever the candidate solutions you have, you will apply all of them to break it. Okay, means suppose आपके पास 10 bits हैं, right? So can you tell me how many possible way you can means employ these 10 bits for breaking one algorithm if we assume that one bit have two possible ways of breaking that algorithm? कितना होगा? 10C2 कॉम्बिनेशन 10C2। और कोई बताएंगे? मैं ये बोल रहा हूं, आप लोगों को पता है एक बिट में कितना हो सकता है नंबर्स? 0 और 1, राइट?
तो 0 और 1 मैं ये मान के चल रहा हूँ दोनों ही तरीके से, देयर आर चांसेस दैट बोथ द वे यू कैन ब्रेक द एल्गोरिथम। तो 10 बिट्स दिया गया है तो कितना हो सकते हैं, हाउ मेनी पॉसिबल वेज ऑफ ब्रेकिंग दैट एल्गोरिथम? Come on, answer the question. At least try. हाँ विक्टर बोलो। 5C2. 5C2, okay. কোৱা হিমাংশু, অম্লান, বৰ্ণালী, ভাগ্যশ্ৰী, ৰাজকিশোৰ, Divyansh, you tell me any your guess about that. Come on, Sir, 10C2. 10C2, okay. तो आप लोग एक चीज गलती कर रहे हो, मैं सीधा सीधा आप लोगों को बता दिया था, ठीक है, कि एक बिट में 2 डिफरेंट वेज हैं, 10 बिट दिया हुआ है तो कितना होगा, ठीक है, ये बाद में करके बता देना, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा सोचना उसके बाद बता देना, ठीक है। तो फिर से आ जाता हूं मैं ब्रूट फोर्स अप्रोच के ऊपर। ब्रूट फोर्स सर्च क्या है, तो ऑलवेज पॉसिबल टू सिंपली ट्राई एवरी के, जैसा मैंने कहा कि जितने पॉसिबल कैंडिडेट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, यू विल बी गोइंग टू ट्राई ईच ऑफ देम। देन मोस्ट बेसिक अटैक proportional to key size, assume either know or recognize the plain text। ठीक है, आप क्या करो, ये जो टेबल दिख रहा है, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, लिया? Yes, sir. और जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर इसी टेबल में आपको मिल जाएगा। मैं थोड़ा तरीके से अलग क्वेश्चन पूछ रहा था, यू विल गो थ्रू द टेबल, यू विल गेट द आंसर। बट जब भी कोई पूछेंगे ब्रूट फोर्स सर्च, मैं फिर से एक बार डेफिनेशन बता देता हूं, ऑल ऑफ यू लिसन केयरफुली, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूछूंगा कि क्या है ब्रूट फोर्स सर्च, ठीक है। ऑल ऑफ यू लिसन केयरफुली। Brute force search means we try to employ all the possible candidate solutions to break that particular ciphertext or break the password of any system। हिंदी में क्या है कि आपके पास जितने पॉसिबल वे हैं वो सारे से आप एम्प्लॉय करके, वो सारे अलग अलग जितना अप्रोच मतलब कैंडिडेट सॉल्यूशन हो सकता है, वो सबको एम्प्लॉय करोगे आप जब तक आप वो पासवर्ड को ब्रेक नहीं कर लो। তোমাৰ ওচৰত যিমানখিনি পসিবল ৱেজ আছে, পসিবল কেণ্ডিডেট সলিউশনছ আছে, গোটেইখিনি এপ্লাই কৰিবা যেতিয়ালৈকে পাসওয়ার্ডটো ব্ৰেক হৈ নাযায়। অল গেট ইট? Yes or no? Sir. Yes, sir. Okay, very good. Yes, sir. I may ask you about the definition at any time, so be careful and please remember the definition. Now coming to the next one, classical substitution ciphers, where letters of plain text are replaced by other letters or by numbers or symbols. Very simple, जिखिनी आसे, जिखिनी plain text दिया आसे, जो plain text दिया हुआ है उसको आप कोई और लेटर से या तो कोई और नंबर से या तो कोई और सिंबल से क्या करोगे, रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। Or if plain text is viewed as a sequence of bits, then the substitution involves replacing the plain text bit patterns with ciphertext bit patterns। ठीक है, तो क्लासिकल सब्स्टिट्यूशन सिफर्स में एक बार फिर से बोल रहा हूं, आपके पास जो प्लेन टेक्स्ट है, सपोज ए है और ए को आप कोई और नंबर से रिप्लेस कर दो, जेड से रिप्लेस कर दो, बी को सी से, लाइक दैट, देयर विल बी ए वे ऑफ रिप्लेसिंग द टेक्स्ट। That is the classical substitution ciphers. The Caesar cipher, earliest known substitution cipher, and it is known as Caesar cipher because it is being introduced by Julius Caesar. First attested use in military affairs, replaces each letter by third letter on। फिर से एक बार सभी लोग ध्यान से सुनना, सीजर सिफर को कैसे हम एम्प्लॉय कर रहे हैं, रिप्लेसेस इस लेटर बाय थर्ड लेटर ऑन, ठीक है, बुझी पाला। नाउ
coming to the example, meet me after the toga party. Right? अब ये देखो, नीचे जो हमने लिख के रखा है PHHWPH like way SDUWB for party. हम कैसे कर रहे हैं? M, ठीक है? M के बाद था NOP. सबे मन दी শুনি আছা? M और पाছত की হয়? NOP. P to third letter হয়? P third letter है ना? तो मैं M के बदले क्या लिख रहा हूं यहाँ पे? P लिख रहा हूं, ठीक है? सिमिलरली E के बाद थर्ड लेटर क्या हो सकता है? FGH, right? H will be for means E will be replaced by H. Similarly T, UVW. So W is the third letter. So W. Buzi pala? So similarly me, P and H. A, B, C, D. D is the third letter. D. F, G, H, I. ठीक है? समझ में आ गया? तो इसी तरह हम पार्टी को कैसे रिप्लेस करेंगे? SDUWB, बिकॉज P के बदले हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? आ रहा है समझ में? सबको समझ में आ गया? QQRS, S is the third one, so then A के बदले BCD, D is the third one, RSTU, U, then T के बदले TU, STUBW, W आ जाएगा, Y के बदले B आ जाएगा, क्योंकि YZA B is the third one. So this is the Caesar Shipper. I hope all of you got it. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, now write down a question that you will do using the Caesar Shipper after this class. Meet me. सबे लिखी जोआ, सब लिख लो yes. Meet me behind the booker after सर the बुकर स्पेलिंग क्या होगा सर? BHUKKAR. KAR. हाँ बुक्कर, केयू में है ना? Yes, sir. केयू में कैफेटेरियन है ना, बुक्कर बोलते हैं, पीछे हैं, सुना होगा सब. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? Meet me behind the booker after the laboratory class. Have all of you noted it down? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now Yes, sir. find out the substitution shaper. क्वेश्चन को लिख लेना, using the Caesar Shipper method. तो ये करके find out the Caesar Shipper using the means find out the substitution shipper using the Caesar Shipper method for this plain text. Okay, I'm stopping here. You will get 10 minutes of time to do it and post it in the group. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir.